फ्रेंड्स वेलकम, जय श्री राम। वेलकम टू भारत मार्ग। भारत मार्ग में आपका स्वागतम। आज हमारा बातचीत होगा कनिष्का एयरलाइन ब्लास्ट, ओके, जिसको उड़ाया गया आतंकवादियों के द्वारा, खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा इसको उड़ाया गया 39 इयर्स बैक। और इसमें कैनेडियन हिपोक्रेसी वर्सेस कैनेडियन जस्टिस सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, कैनेडियन एयर इंडिया प्लेन that was taken out or blasted by आतंकियों के द्वारा, जिसने क्लोज टू 370 इनोसेंट ह्यूमन बीइंग को, जिसमें हत्या हुआ खुलेआम, मगर कोई जस्टिस नहीं। इसमें 70 के आसपास बच्चे थे। वी विल गो थ्रू विद विनय जी मोर इन डिटेल ऑन दिस। ओके, before getting started friends, please make sure to like the video, comment on the video, share the video. अगर आपके पास कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। ओके, यही है एयर इंडिया कनिष्का के बारे में हमारा जो आज का बातचीत है। आपका जो भी कमेंट करना है कमेंट करें। ओके, बट बिफोर make sure to subscribe our channel भारत मार्ग and also press the notification bell दोस्तों, ताकि हमसे जुड़ के रह सकें, and you can share the video. And also we teach Sanskrit for free. Okay, and you find a lot of things what we are doing here as a good cause, giving to the community back. If you are interested, you can contact us in our WhatsApp. Our WhatsApp number is given here. And also we send out one dharmic message every day along with Gaudan, Annadan, Puja, Havan, everything. And if you are interested, friends, you can subscribe for our one dharmic message every day, and you and your family can be connected to the roots of Sanatan Dharma. And also please support us by sharing this video and also giving dan to us. If you like what we are doing, you can send us a WhatsApp to +16479644790. Okay, Vinay ji, Jai Sri Ram. Welcome. Okay, welcome. Kanishka Airlines, okay, एयरलाइन ब्लास्ट 39 इयर्स बैक आतंकियों के द्वारा इसको उड़ाया जाता है। ओके, मगर इधर का जो गवर्नमेंट है, इसने कैसा हिपोक्रेसी किया। इसमें जो भी अपना जान, जिसका हत्या हुआ, जिसमें 70 के ऊपर बच्चे थे, उनके लिए कोई जस्टिस नहीं हुआ। ओके, इज इट लाइक दिस? यू कैन कवर मोर। उनमें सब बहुत सारे ब्राउन स्किन थे, नॉन अब्राहम थे, हिंदू थे, इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए कोई परवाह नहीं था। और ये जब हुआ था, ट्रूडो का पिताजी था पीएम। या प्लीज टेक ऑफ, विनय जी। Yeah, I mean, like the sad part is that 39 years ago, on 23rd of June 1985, when Justin Trudeau's father, Pierre Trudeau, was the Prime Minister of Canada, this particular Air India Flight 182, which is called the Kanishka, was traveling from Montreal to London to Delhi to Bombay. That's the route that it was traveling. So when it took off from Montreal to London at an altitude of 31,000 feet. one second, विनय जी, मैं दर्शकों के लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों। इसमें अभी ये सवाल को विनय जी आंसर देने के बाद मैं ऐसा एक वीडियो दिखाऊंगा which is very chilling. Okay, make sure to watch that video. Yeah, please go ahead. Yeah. So when it took off from Montreal, it is the perpetrators of this Kanishka bombing, the Khalistani terrorists. They had planted a bomb on board the aircraft, and how the bomb got in there and all those details, I don't want to go into that, but you can read up about it, if you're interested. But anyway, a bomb was planted on board the aircraft, and the flight took off from Montreal, and it was flying at an altitude of 31,000 feet. And the aircraft basically, had a blast. It was flying over the Atlantic Ocean,
And surprisingly, like, you will be amazed at the intent, the intensity of the bomb, that the remnants of the Air India flight, like the when it was shattered into multiple pieces. Some of these pieces were found as far as 190 kilometers off the coast of Ireland. Okay, and the that was the intensity of the mob, and it killed all 329 people on board, including 268 Canadian citizens, 27 British citizens, and 24 Indian citizens. Okay, and it's called, the bombing is this particular bombing is called the worst terrorist attack in Canadian history, the deadliest aviation incident in the history of Air India, and was the world's deadliest act of aviation terrorism until the September 11th in 2001, 9/11. Okay, so the mastermind behind the bombing was Inderjit Singh Rayat, a dual British Canadian national who pleaded guilty in 2003, Talvinder Singh Parmar, a Canadian Sikh separatist leader of the Khalistan, and who was one of the with the militant group Babbar Khalsa. Okay, so this is just a quick background on what really happened and how it happened, and the just the intensity of the bombing and the gruesome murder of 329 people. Okay, so now, although a handful of people were arrested right after that, the Babbar Khalsa, a Sikh terrorist and Khalistani separatist group, was the one behind the bombing, and Canadian government did not, you know. Basically call this particular, or list this particular terrorist organization as a terrorist organization up until, like, I think just a few years ago. Okay, that is the sad part of Canada. All right, and funnily enough, the person who was involved in this particular bombing, who was arrested later on, the Indian government asked the Canadian government to extradite him, but the Canadian government refused to extradite him, and this is basically before the bombing actually happened. Okay, because the Indian government had intelligence, information that this was going to take place, and they warned the Canadian government. But despite that, Pierre Trudeau said, no, we are not going to, extradite this person, because it's just based on your intelligence agencies, not based on our intelligence agencies. Our intelligence agencies are far more superior to yours, so we don't believe your intelligence agencies. And these were all the things that Pierre Trudeau had a very, 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 very bad ego, and the same thing is being repeated right now with Justin Trudeau. विनय जी, लेट मी आस्क यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ओके, कनाडा जो है उसमें आपने बता रहे थे कि कनिष्का एयरलाइन 2 फ्लाइट उड़ाया गया था, एक तो जापान में उड़ाया गया. ओके, उसके बारे में भी जरा टचअप करें. और उसके आगे ये सवाल है आपके लिए कि आपने बता रहे थे 329 कैनेडियन सिटीजन्स वर किल्ड, मर्डर्ड. ओके, मगर ये एक आतंकी के लिए कितना क्यों रोता है कनाडा? 329 के लिए कुछ नहीं, मगर एक के लिए इतना. इसमें क्या फर्क क्या है, ये 329 से बारी? Well, the thing is, see, I just explained to you, right? Like, there was the 329 people who were killed, included 268 Canadian citizens, 27 British citizens, and 24 Indian citizens. And like you said, most of these people who were traveling on Air India, they were going to India to visit their relatives and family, friends, whatever, right? And most of them belong to the the Indian ethnic group.
Okay, so that's the reason I'm Hindus, not. mostly Hindus. Mostly Hindus, maybe Punjabis, नहीं, maybe Sikhs. पंजाबी क्या होता है? पंजाबी रिलीजन है क्या? No. I'm just saying वो Punjabis भाषा are. बोलने वाले है ना, वो तो हिंदू भी It's a बोलते हैं. region. I mean, like Punjabis could be Sikhs, could be Hindus, could be Muslims, could be Catholics, whatever, right? So I'm just kind of mostly people who were traveling, from the Punjab region. That's what I meant. All right, but there were also many other Indians who were traveling because this flight was heading to Delhi and eventually Bombay, right? So that's basically what really happened. And I'm not sure whether it's I don't want to comment on something that I don't know of. So I don't want to lean on any racial discrimination about this or whatever. So I don't want to go into those details. But going back to your first question, yeah, there was two baggage handlers at Narita Airport in Japan also were killed by another bomb that was meant to target another aircraft. Okay, on the same day. Okay, that's June 23rd, 1985. All right. So the thing is, like And this one this person was killed in Japan. this was planned in a way that this was not just targeted for a certain people. This was created rather this bombing was basically planned to create a global terrorism, to make sure that people are afraid One across the second, globe. one second, Vinay, just hold on a second, okay? I just want to show you, ये वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं जहां यही कॉल अभी दिया हुआ, okay? I think Seema ji is joining us. Okay, Seema ji, you had a technical problem, वो आपके लिए स्वागत है. मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखें, जैसा कनिष्का में अटैक हुआ वैसा ही करने के लिए दोबारा खुला खुला कनाडा में ये आवाहन किया गया. ओके, ये सुनिएगा. सब तो पहला बॉयकॉट कर रहे हैं एयर इंडिया दा ਤੁਸੀਂ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ This is by Panu. ਤੁਸੀਂ ਬॉयकॉट एयर इंडिया एंड fly एयर कनाडा एयर इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ we are coming for you. आप सुन रहे थे? जी बिल्कुल मैं सुन रही थी. और ये एक मिनट जरा, ये अभी सुदर्शन चैनल में मेरा मैं बोल के हटी हूं, उसमें भी इन मुद्दों को बहुत सीरियसली लिया गया. पहले भी ऐसे ही हुआ था. पहले भी इन्होंने जब ये विमान में अटैक्स करना था तो इनका प्लान बन रहा था, तब पहले भी इन लोगों ने ऐसे ही अपने लोगों को मना किया था कि वहां इनडायरेक्टली मतलब कि ना सफर करो. अभी सेम ये वही दोहरा उसको बंद करना भैया. अभी भी ये वही कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं उस चीज को. बात ये है कि ये बातों से मानने वाले नहीं है. इनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि ये इतने मतलब खतरनाक लोग हैं. इनको जो 40 साल तक जो एक ढील दे रखी गई ना, इसका रिजल्ट जो है आज अब फिर से देश और देशवासियों के आगे आ रहा है. तो ये बिल्कुल निडरता से बदमाशी करते हैं और जो भी इनको रोकने की कोशिश करता है उसको ये मोबाइल में मैसेज भेजते हैं, फेसबुक पे मैसेज भेजते हैं, हर जगह सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज भेजते हैं, लाइव चला के खुलेआम बोलते हैं कि जो भी बोलेगा उनका सौदा लगा दो. लाइव टिकटॉक पे लाइव, मेरे पास इनके बहुत सारे सबूत हैं. मतलब हदें पार कर दी है इन्होंने. अभी तो मेरे को बहुत सारे कंट्रीज से भी फोन आ रहे हैं कि सीमा ये बहुत लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, ये डेंजरस जोन में जा रहा है सोसाइटी, तो इनको रोकना बहुत जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. ये विनय जी, मैं आपसे आऊंगा. ये जो हैं स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये इनका नाम है रवनीत बिट्टू. ओके, हु इज अ माइनॉरिटी मिनिस्टर राइट नाउ. ओके, माइनॉरिटी का मिनिस्टर है and he was part of Congress before, okay, from Punjab.
एंड उस वक्त उन्होंने बोला, एक बहुत बढ़िया भाषण किया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कि गुरुद्वारास आर रन बाय टेररिस्ट्स एंड गैंगस्टर्स, ओके। एंड इसका 90% का इधर जो है ये अकॉर्डिंग टू रवनीत बिट्टू, ओके, किसका ग्रैंडफादर को निज्जर के द्वारा मारा गया था, sitting CM that time, okay, and he was saying that 90% of the Canadian gurudwaras are controlled by Panun, and they are the hadda of drugs and prostitution. Okay, this is now he is the minority minister from Punjab, means for the Indian government. What do you see in this? Oh, it's pretty straightforward. Yeah, this has been happening for a while now. And it's not, it did not start today. A lot of people think that this Khalistani movement has just started, right? It actually started way back before 1984. Okay. And it was kind of taking so much precedence over other issues in India that all of a sudden, with under the leadership of Jarnail Singh Bhindranwale, the whole movement took off, and it peaked at a point where these terrorists, at the time, what exactly Bittu said, were hiding in gurudwaras, taking shelter in the gurudwaras under the name of religion and under the name of this whole movement, and they were doing all kinds of activities, illegal activities in these gurudwaras. They had accumulated arms and ammunition, like you said, God knows what else was going on, drugs, prostitution, or any all the kind of stuff. That's right? What said by the current sitting minority minister of India, who is from Punjab, and who's right, and that's exactly what I'm saying. So this movement has been going on, and then 84, just before 84, Indira Gandhi sent the forces to the Golden Temple, caught these terrorists, killed many of them, including Bhindranwale. And then as a result of that, Indira Gandhi was assassinated by her own security people, who were, again, Sikhs. And then the Sikhs basically, and the Congress workers went on a rampage and killed these people mercilessly. The Sikhs, assuming that every Sikh was responsible for the killing of Indira Gandhi, which is not right. And then after that, these guys left India on the pretext of, we are being persecuted by the Indian government and stuff like that. And they moved to Canada, they moved to UK, they moved to Australia, US, and so many other countries. And Canada became the biggest, shelter giver for these Sikhs and ex-Punjabi Khalistani terrorists, mainly coming from Punjab, and then it kind of had fizzled out, the whole movement, and all of a sudden, under the leadership of Panun, this is taken off, and now you got many people leading many different factions of this Khalistani movement, and Bittu is now basically warning the Indian government. And now that he's part of the Indian government, part of the Indian cabinet and all that, the government, he's actually a minority minister. And although he lost the elections, he was given the ministership because the Modi cabinet and Modi, under his leadership, they saw the potential of this guy Bittu. And now basically he's reiterating the same thing, that these people are coming back and they have arms and ammunition in gurudwaras, they have prostitution going on, drugs are on a rampage, and it's unbelievable what's happening there. Yeah, सीमा जी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि कनिष्का एयरलाइंस में क्लोज टू 250 कैनेडियन सिटीजन्स जो हैं वो मरे हैं, क्लोज टू 200, इसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारा महिला, सब इनोसेंट ह्यूमन बीइंग है, उनको हत्या किया गया 39 इयर्स बैक। मगर जो ट्रूडो का गवर्नमेंट है कनाडा में जो बैठा है अभी, वो एक आतंकवादी का मरने के ऊपर उन्होंने इतना रोया, इतना दोया, और उन्होंने पार्लियामेंट में इस आतंकवादी के लिए 1 मिनट का मौनांजलि किया। ओके, उसको इतना मर्यादा दिया। तो ये क्या है? ये आतंकी 250 जो
क्या बोलते हैं, इनोसेंट ह्यूमन बीइंग से बारी कनाडा के लिए। आप म्यूट में हैं, आप म्यूट में हैं, आप म्यूट में हैं। ओके। हाँ, जैसे कि मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है कि शायद जो यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज के है ना लोग, ये उधर के लोगों को ठीक से, ये इन लोगों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है कि ये लोग जो बोलते हैं वो सच है, जबकि इनके हर बात में 90% झूठ एंड 10% जो है सच होता है। सिर्फ 10% सच होता है, 90% ये बीच में झूठ नहीं नहीं इंक्लूड नहीं नहीं करके। नहीं 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 नहीं, मैं आपका बात से सहमति नहीं हूं। नहीं नहीं, सुनो सुनो, मेरी बात पूरी सुनिए। इसीलिए शायद ट्रूडो कहीं ना कहीं उल्लू बनाया जा रहा है, उसको पागल बनाया जा रहा अरे है। वो तो है, अगर वो क्या है, अगर उसको बनाना अगर क्या है। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर कनाडा का आने वाला जो भविष्य है वो बहुत खतरनाक होगा। वो इवन पंजाब से भी ज्यादा खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों को तो पता है कि आतंकवादियों को हैंडल कैसे करना है। हमने 1000 साल तक आतंकवादियों से के साथ जूझा है, तो हमें पता है। लेकिन कनेडियन या इधर यूरोपियन लोगों को शायद नहीं पता है इतने ये ना, तो शायद आतंक करके ही इधर आए थे। तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आतंकवादी अगर एक देश में आतंकवाद करके आए हैं, 50 लोगों को, 100 लोगों को मार के आए हैं, तो वो दूसरे देशों में जाके कोई साधु नहीं बन जाएंगे। उनकी जो मनोवृत्ति है, जो सोच है, वो वही रहेगी, और वहां भी वो उसी तरफ अट्रैक्ट होंगे, गलत रास्ते, क्राइम। अब जैसे आपने भी कहा, इन्होंने कि ये लोग जो है सारी इलीगल एक्टिविटीज में है, प्रोस्टिट्यूशन में ये है, और ड्रग्स डीलिंग में ये है, हर तरह के क्राइम में, थ्रेट, लूटपाट, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग, सब में है ये। तो ये क्रिमिनल्स जो है ना, ये जब ये घेरे में आ जाते हैं, तो फिर ये किन चीजों के पीछे छुपते हैं? हमारी हिस्ट्री देखो, हम योद्धा हैं, हमें गुरुओं ने ऐसे अलाउड किया है AK-47 चलाना, हम योद्धा हैं, ऐसे छुपते हैं। हिस्ट्री देखो, ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन जैसे बिट्टू जी ने पंजाब के, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को एक वार्निंग भी दी है, अलर्ट भी करवाया है। मैं खुद ऐसे ही कहना चाहती हूँ अपनी गवर्नमेंट को कि आप लोग जो हो, बहुत बहुत अलर्ट हो जाओ। और कनाडा जो है, कनाडा एक ऐसी गहरी खाई में जा रहा है, क्रिमिनल्स के हाथ पकड़ के। वो जो अपने देश को डुबोने जा रहा है, वो कनाडा अपना भविष्य खुद ही देख लेगा। हम तो उसका भविष्य बता दिया है। ओके, तो जी, मैं विनय जी से जाऊंगा। विनय जी, आपसे मैं पूछूंगा कि ये जो कनाडा है, जो मैं सीमा जी से मैं सहमति नहीं हूं कि ये उल्लू बन गए। नहीं नहीं, ये देखिए, ये ईस्ट एंड में खालिस्तानियों को समर्थन करते हैं, वेस्ट एंड में वो मतलब LTT समर्थकों को समर्थन करते हैं। उनका मतलब एक ही है कि जो भी देश तोड़ने का बात करेगा उनके साथ होगा, बस। ये मेरा बात है, क्योंकि आप मानते हैं या नहीं बोलिएगा। अगर आप तमिल का जो है, तमिल इधर हैं दूसरा एंड में, उधर गए तो जो भी चुन के आएंगे सब LTT समर्थक हैं, आपको तो पता ही होगा। ओके, सो नो मैटर वेयर यू आर, दे वांट द पीपल हु वांट टू अटैक द कंट्री। ओके, आपका फाइनल वर्ड, योर लास्ट वर्ड, विनय जी। No, what I think 30 is, सेकेंड। yeah, basically what is happening is with uh, with the way the government is right now. It's a minority government in Canada. Okay, Trudeau is a liberal part, is part of the Liberal Party, and he's got support from the NDP, that is headed by Jagmeet Singh. And Jagmeet Singh has got a lot of close ties with the Khalistani terrorists. All right. Now, basically, And his passport is being banned in India. right. Terrorist Okay. mention. So he's friends with all the Khalistani people, the terrorists here in Canada, especially the most of the activities are happening mainly in two provinces. One is British Columbia, the second one is Ontario. Okay, and that's where most of these gurudwaras. And I would not say just confined to these two provinces. It's across the country. Actually, they're controlled by these terrorists. Okay, and obviously there is a certain vote bank here. Okay, and I mean it's actually not bigger than the Hindus. Hindus have a bigger
vote bank. And if you can just take 25 seconds more and talk about the victims of Kanishka Airlines on this occasion, just to kind of okay. So I'm going to switch topics. So with regards to the victims, like there have been a lot of Hindus, and I know personally many people. I don't want to mention names, obviously here, because this is not the right platform for that. But one of them is a dancer, and she actually teaches dance, and she's from South India, and her husband and two kids. Okay, they were on the flight, and they got killed. Okay, and she, was so devastated, but she had to live. So she continued living, and she made her living off of her dance classes and stuff like that. And there's another lady whose husband was traveling to India, and her kids were probably in the 8 or 9 or something like that, and they lost their father, and now she, as a single lady, she had to bring them up. And she, at the time, she didn't even have a proper job, but she took a job and she lives in New Brunswick, and she took a job and she brought them up. And there are very many sad stories about the victims of Kanishka bombing, and nobody cares. And the funny thing is, I just want to say one thing about the CSIS report, right? So apparently, a few days before the Kanishka bombing, there was an explosion. Okay, when the whole bombing thing was being conspired and planned, and basically the explosion was, and they got intelligence reports that there was an explosion somewhere out in the forest, and funnily enough, the the people did not even pay attention, the CSIS, I mean, and they basically ignored it and said that this was just somebody fired a gun or something, because hunting is a big thing in Canada. So somebody was hunting or whatever, right? So they did not even pay attention to it. But look what happened after that. So this is the way, I mean, the whole conspiracy is everything was known to Indian intelligence, and Indian intelligence let Canadian intelligence know, but despite that, they ignored the whole thing, and the same thing is being repeated right now. And what you just saw, this video that you just showed up by, by Panun. So same thing, he's warning that very soon that many other Air India flights may be bombed. So he's warning his people not to travel on those Air India flights. Anyway, that's right. And the last word from Seema Hindustani ji. जी, क्वेश्चन क्या है जी? मतलब ये जो कनिष्का बॉम्बिंग हुआ, इनका विक्टिम्स के लिए आप श्रद्धांजलि करें, उनके बारे में कुछ भी बताना है तो बता सकें जी। श्रद्धांजलि तो हर साल होती है, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो भी इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, उनको शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए, उनको शुरुआत में ही जो है, जैसे ये पन्नू है, खुलेआम जो एक साइन दे रहा है, तो इसको अगर हमारी गवर्नमेंट पकड़ने में कामयाब हो जाती है, तो यही श्रद्धांजलि होगी। बाकी बातें करने से तो कुछ होने वाला नहीं है ना? हम लोग शब्दों को सुंदर बना के चेहरे पे उदासी दिखा के हम लोग शो कर दे, लेकिन कर्मा करे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं। आई थिंक बहुत सारे लोगों की जानें बचाने के लिए ये जो कुछ टेररिस्ट हैं, इनको नकेल कसने के लिए हमारे देश को ही कोई प्लान करना होगा, क्योंकि विदेश जो है वो तब सुधरेंगे, तब उनको समझ आएगा जब उनके अपने घर में आग जब गोरे के ऊपर अटैक होता है तो वो समझ लेते हैं, बस हमारा ऊपर हुआ तो उनको कुछ नहीं, परवाह नहीं होता है। यही मेरा मानना है। लग चुकी है, कनाडा में भी लग चुकी है। वहां कोई एक कम्युनिटी थोड़ी ना है, सबको पता ही है कि ये एक टेररिज्म को अगर फीड देंगे तो क्या वहां उसका असर होने वाला नहीं है? वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। देखना आप, देखते देखते क्या होगा कनाडा का। Absolutely. Okay, thank you very much, friends. What do you think? Just do right and let us know in the comment area. Thank you, Vinay ji. It's a very, very heavy moment, but you know what? Justice delayed is justice denied. And here the Canadian government is wantedly protecting the culprits. Is nothing more, nothing less to say. That's what it is. But what do you think? Okay, you please comment and let us know. Thank you again.
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, हरे कृष्णा।